Yes, I've just joined. But I'm not able to get the audio. Am I able to hear me? No, one second. Can no? Can you hear me on the speaker? Yeah, we could hear you. Sir, this Costaway, we can hear you. Okay, thank you. Yes. We could hear you speak. Ramesh sir, can you hear us? Just Yeah, I can hear you. Am I audible? perfectly. Yeah, thank you. Just confirming to you that we can see you loud and clear, and we're just waiting for the. That's right. So just confirming you can hear us. Unmute yourself, maybe. So just confirming that you can hear us. Yes, Ramesh? yes, Costa, I can hear you. Wonderful. Am I audible? Absolutely. Loud and clear. Thank you. Thank you so much. Thank you for making it, sir. We are just joining in another 2 or 3 minutes. We are going to start the program. Just
Unmute. So we are going to start our session. First of all, good afternoon, everyone, and welcome all. So as you all are very well aware that India and UAE have signed a comprehensive economic partnership agreement in February, and it is likely to come into. So UAE is a big market for Indian gem and jewelry exporters or the products, because our nearly $6 to $7 billion of gold jewelry is exported to UAE and $1 to $1.5 billion of diamonds, cutted polished diamonds are exported to the market. So in this way, UAE is really very important for us from the economic point of view. Now, I am also glad to share that during the negotiations of India and UAE, GJPC has played a very important role. Whatever the free market access that we have in terms of like duty zero, like free access in terms of tariff, nil tariffs on gold and gold jewelry UAE market, that is from 5% or nil duty. So that is just because we have made a very strong recommendation to gold jewelry UAE market. Because if you remember in 2017 or 18, there was no duty in UAE for our gold jewelry products. But after the imposition of 5% duty, our gold jewelry exports have gone down. So keeping that context, that historical experience with us, we have really convinced the government like it should be. And in consideration, we can provide a very partial access or very limited access of import of gold in market. So if you see, like, because it is really a given, whatever the FTA, the major principle of FTA is only the give and take relationship. Like if we are taking something from UAE, we have to give something. So because we are exporting finished gold jewelry to UAE market and we are importing gold from UAE market, so it means like there is an export complementarity that exists between the two markets, and that's what we have tried to establish and try to capitalize. Now, so we can broadly see like there is a benefit of this FTA that is being negotiated and coming on the grounds from 1st May, likely to come on ground on 1st May. It is very important to understand the real benefit of this FTAs first, and second is the procedure, because whatever happens, like any kind of trade agreements or another kind of deal, that is absolutely come with the procedures, and definitely there will be new procedures for it, like how to take benefit, how to leverage the benefit, especially for the Indian gold jewelry and diamonds. So at this context, we have kept this program scheduled and organized for our members, specifically for gold jewelry and diamond members, so that they can understand how they can leverage or how can they take the advantage of this trade agreement on which the government, with various stakeholder consultation of so many months, like it has come into the picture. Now, going ahead, so today we have a galaxy of experts from PwC. Sorry, I'm late. So today we have a galaxy of experts from PwC. Mr. S. Rameshji, Mr. Kaustav Sen, and Mr. Gautam Khattarji. So welcome you all, sir. Welcome, Mr. Kaustav, sparing your time. And our panelists and our speakers have really done a very made a good attempt in preparing this document, because it's a new effort by the government for our Indian exporters. So they have really tried to put a very good document for our Indian exporters as well as our members for today's program. So I hope like the deliberations, the discussions are really going to be very helpful for all of you. So, but before starting this session, I would like to introduce our experts to the audience. So S. Rameshji is a managing director in Price Waterhouse and Company LLP India. So he has a 37-year long stint in the Indian Revenue Services. He retired as the chairman of the CBIC in December 2018. So welcome, sir. So most of these years were in the senior management and board level positions in the Ministry of Finance.
dealing with various facets of public finance, budget planning, administration, integrity management, ICT, as well as customs and indirect tax policy formulation, tax design, and so on. So he held national responsibility for indirect taxes and custom issues and represented the Ministry of Finance at various parliamentary, administrative, and public fora. He holds MBA degree from Australia, MSc in Mathematics, Statistics, Research, and LLB from Indian universities. So welcome you, sir. Our next expert is Mr. Kaustav Sen. Kaustav is a principal in Price Waterhouse and Company LLP India with over 19 years of experience of tax consulting. He specializes in indirect taxation, GST, customs, and foreign trade policy matters. He has extensively worked on various operational and technical relating to valuations, exports, claims, exemptions, advocacy, and other implications under FTP and regulations. Kaustav has been involved in multiple representations for the tax authorities on various technical aspects, including high value tax assessment and litigation. Welcome, Kaustav. We are having with us Gautam Khattar. He's a principal in Price Waterhouse and Company LLP India. He has about 20 years of experience in customs and tax consulting. He has acted with the Ministry of Finance and Commerce and the tax authorities, including various matters involving valuation of imported goods and so on. So I hope like Mr. Gautam Khattar ji has not joined yet. So. We are going to start this session with a special note, address, and key insights that Mr. Ramesh ji is going to share. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much, Rashmi ji. Namaskar. Very good afternoon to everyone. Am I audible? Just want to check up. Yeah, am I audible? Yes, sir, you are. Yeah, thank you. Thank you. A very good afternoon to all the participants of this webinar. Actually, it's a very, very big privilege and honor for me to take part in this webinar and to share my thoughts on the important aspects about this India UAE SEPA impacting the gems and jewelry sector. First of all, I would like to compliment the Gems and Jewelry Export Promotion Council and all the members, all the trade and industry in this important sector for having achieved over $40 billion of exports in the last financial year. Congratulations to all of you. And this is almost 10% of the entire exports of India's exports last year. And I'm very confident that in the years to come, this $40 billion will grow substantially and will go up by leaps and bounds, especially once the SEPA, India UAE SEPA comes into force. So I'm very confident about this, and I'm sure that after today's discussion, you will all agree that there are a lot of opportunities to ensure that the export promotion takes place in a much better way, and India's exports in the jewelry sector will improve in the years to come. Having worked, as Rashmi was saying, I worked for about 37 years in the Customs Department and I retired as chairman. I've had several occasions during which I had interacted with the Gems and Jewelry Export Promotion Council. I warmly remember the interaction I had with all the members and the council members. And always I found that they were very, very keen to ensure smooth and expeditious clearance of customs cargo as quickly as possible for the benefit of all the members. And I'm sure that this particular SEPA also has a lot of provisions which have been built in the SEPA to ensure that the customs procedures are smoothly done and export and import are done very smoothly. I would also mention that this SEPA is a very, very historic trade pact. I think it's very historic because India and UAE has signed this on 18th of February 2022. आपको पता होगा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे व्यस्त थे. He was there at that time. He was there while the signing took place, and he also addressed the gathering. This shows that Prime Minister Modi is very, very keen on this particular SEPA agreement because he knows the enormous trade potential of this agreement, especially in the gems and jewelry sector. And I'm sure that the
provisions which are there in this particular sector, for this sector in the SEPA, will be discussed threadbare during this particular webinar. And I'm sure that whatever doubts you have, we will try to address to the best of our ability. Let me just add a few things saying that caveats here, that the relevant customs notification, which is required to give the customs benefit under this particular SEPA, has not yet been issued. It is under process. I believe it's gone to the highest level in the finance ministry, and very shortly it will be issued. So we hope that at least in the first week of May, this will be issued, and India SEPA agreement will be actually implemented on the ground, and it's going to be a very historic time for the gems and jewelry sector. So turning over to this particular slide, which is in front of you, I would like to go to the earlier slide, dwell on a little bit on the earlier slide. I would like to say that this particular agreement, which has been signed between India and UAE, is a very important agreement. Primarily because it's a very different type of agreement compared to the FTAs which India traditionally signed. India has signed a lot of FTAs, you are aware, with ASEAN countries and other countries. But the word SEPA has been used only on 2 occasions earlier. So SEPA stands for a Comprehensive Economic Partnership Agreement. This shows that it's a very, very important critical agreement which India has signed, considering UAE as a very special partner, economic partner in the growth story. Only for UAE, only for Japan and Korea, the word SEPA has been used in the agreement. For others, it has been mostly a free trade agreement. So as you see in the slide on the right-hand side, you can see the list of chapters which are there as far as this trade agreement is concerned. There are about 18 chapters. We have listed a few of those. But I would like to just say that there are some very, very important chapters which are very critical to this particular agreement. The India-UAE SEPA is perhaps the first of its kind, in the sense that it was a very deep agreement and a very full-fledged trade agreement. Deep because the integration between the 2 countries, as Rashmi was saying, because of the complementarities between both the countries, the deepness is there. The growth of the integration between the 2 countries is going to happen, especially as Rashmi was pointing out, import of gold into India and the export of jewelry across the border to UAE is going to lead a lot of complementarity, and it's going to lead to a deep integration of the 2 economies. So this is the first important agreement which furthers this particular deep integration. And secondly, this is a very, very detailed agreement. As I told you, 18 chapters are there. But the most important chapters I would like to stress on are just a couple of chapters. One, of course, is the trade in goods, where the list of all the items are there, especially the gold and jewelry items, which we'll be discussing in detail. The third chapter, called the Rules of Origin chapter, is very, very critical. We'll be going into it in detail. But aside from this, I would also like to say that it's very critical to understand that this particular SEPA has inbuilt provisions for 2 things. In addition to these 2, one is the customs procedures and trade facilitation. Now, India is part of the trade facilitation agreement, and UAE is also part of the trade facilitation agreement, which the WTO has mandated. This means that the borders between the 2 countries, as far as trade is concerned, should be facilitated by the customs. And a lot of importance is being given by customs based on various promotion measures to ensure that there is better and faster and smoother trade. The second thing which is important is about trade remedies. Rashmi was saying about certain things which can be imported into India from SEPA, from the UAE country under the SEPA. So there are some provisions in the trade agreement which allows the Indian domestic producer to raise his voice against any injurious imports. Suppose there is a surge of imports because of the SEPA for a particular commodity. Maybe it could be some jewelry itself, which could be coming in under the import terms, under the relaxed manner. So if there is a surge, then as a domestic producer, I think you have every right to raise this with the government, and the government will take it up very seriously. So I think this is a very comprehensive agreement which not only allows the exporters to benefit, but also protects the exporters, the domestic industry, in a very big way. And not only that, this particular agreement is a stepping stone towards further agreement in the entire Gulf Cooperation Council area, the entire Middle East. And I think this agreement has also laid down a broad template
which is going to be followed by India and many of the future FTAs. So that way, I think this is very critical that we understand what is there in store for us as far as this FTA is concerned. Moving on, I would just like to broadly touch upon the gems and jewelry sector. As Rashmi was mentioning, it's a very important area for this sector. In fact, this particular UAE agreement the UAE has offered at least 97% of its tariff lines to India for the beneficial preferential agreement. And India has also accorded over 90% of its tariff lines for UAE. So both ways, there is a give and take, as she said. And it's very important to understand how UAE is positioned as far as the global gold trade is concerned. It is perhaps one of the biggest global hubs in the world. Almost 20 to 30% of the entire gold stocks in the world pass through Dubai every year. And gold exports in Dubai as an export commodity is about $58 billion a year. So having said this, as Rashmi said, in UAE is already a very big market as far as jewelry exports are concerned. And I think it's very critical that this particular market is tapped to the optimal level by the Indian exporters. We have seen that UAE accounts for about 66% of India's plain gold jewelry and 34% of studded jewelry. And a lot of exports take place as far as the gems and jewelry concerned. It was almost touching about $5.7 billion. And it's also very important to understand that this CEPA is going to give a boost in terms of exports of jewelry. It may touch about $10 billion, that's the estimate, in as early as 2023, which is not very far off. And it's very critical to understand that this CEPA has given a lot of benefits to gold jewelry, non-industrial diamonds, other precious and semi-precious stones and imitation jewelry. But the tariff, as Rashmi was saying, tariff is brought down from 5% to 0%, which is a very big sort of a gesture from the UAE government in response to what India has done. So I think this is very critical. What is also very important is the reduction in the import duty of 1% on the gold imports, which will be coming in a phased manner. So this approximately 120 tons keep coming from UAE year on year for the last few years. So that is a level at which it will start in a phased manner, and it will go up to 200 metric tons in about 5 years. And the 1% reduction in gold imports will definitely give a substantial cost reduction to the exporters in a very big way. Very important matter is also about the customs procedures on the through the air cargo also. I'm sure water facilities will be ensured in the trade agreement. And to dwell on more of the exact nature of the gem and jewelry sector, the actual tariff lines and the details, I would like to hand it over now with these introductory remarks to Costa, who will take it forward. Thank you. Thank you for that wonderful introduction to the sector and the CEPA with UAE, which we are looking at. What I would like to do is to get into a bit of the details now as to what segments and categories and product applies to. And we'll get into a bit more of the granular points of view that we need to try and keep in mind while we are accessing the benefits of the CEPA. Look at the screen now that we have, and we have focused parts. One is jewelry related products. Of course, that would be separated into the first four, which is the plain jewelry, and then jewelry set with pearls, or jewelry set with diamonds, or jewelry set with semi-precious stones. This category of jewelry, which is forming about, say, almost 60% of the market in the UAE, imports about say $14 of value, and of which we are exporting about 8. So what we can look at doing is that the evaluation of the benefits here have to be taken on 4 parameters as well. And if you see the first column, the first aspect that you need to understand is that there is an India HSN, which is deployed on the export of the item from India. Second aspect that we need to be very closely mindful of
is the description of the, which is a short narrative on what the product is being exported. Third is the UAE HSN, which is similar to the India HSN, but that is declared by the importer in UAE at the point of filing of the bill of entry in UAE. In some cases, as you would see, it is the same, but in some cases, there may be a slight differential as well. Fourth and critical point that we will be taking a deep dive on right now is the rules of origin, which is referred to as the ROO, which is in the 7th column in the table. Now, as ma'am pointed out earlier, any free trade agreement or SIPA is based on a symbiotic relationship of trade between two parties. Therefore, the concessional duty, which is a nil-rated duty which is being offered by UAE to India, is dependent and is subject to certain criteria, which fundamentally means that the rule of origin, that these items which are being exported from India need to fulfill the origination criteria which has been prescribed. In that framework, the origination criteria has been prescribed at two sub levels. One, the manufacture of the product should happen in India, and that manufacture should require there to be a change in classification at a 6-digit level by the exporter, which So just to एक HSN क्लासिफिकेशन होता है, जो हम जब इंडिया से कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक क्लासिफिकेशन डिक्लेयर करते हैं इंडियन कस्टम अथॉरिटीज को। वो HSN क्लासिफिकेशन, सिमिलर HSN क्लासिफिकेशन यूएई में भी है, अभी जब हम यहाँ से कोई भी ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो पूरी स्लाइड है इसका एक समरी ये है कि जब यहाँ से जब ज्वेलरी एक्सपोर्ट होगी, आज की रेट का करंट रेट समझो 5% है। In for an importer who is there in UAE, if he is importing, अगर वो ज्वेलरी इंपोर्ट कर रहा है तो उसको 5% ड्यूटी भरनी पड़ती है। However, अगर ये सेपा में कोई बेनिफिट ले गए और हम उसके प्रोसेस पे जाएंगे कि उसका बेनिफिट कैसे लेना है, वो ड्यूटी आपके इंपोर्टर के लिए 0% हो जाएगी। तो 5% का मुनाफा होगा आपके इंपोर्टर्स को, या आपके एंड पे वो एक बिजनेस सिनर्जी आपकी हो जाएगी, आप कॉम्पिटिटिव बन जाओगे मार्केट में। बिकॉज अगर वो कहीं और से इंपोर्ट कर रहा होता, कहीं और सप्लायर से, तो उसे 5% ड्यूटी भरनी पड़ती। बट अगर आप ये प्रोसेस के हिसाब से बेनिफिट लोगे, तो आपके सप्लाई किए गए गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड्स पे उसे ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। तो 5% सेविंग्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव है, जो एक बायलैटरल ट्रेड में दोनों गवर्नमेंट्स ने एग्री किया है। उस इंसेंटिव को लेने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्लायंस विद रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन का बेसिक फंडा ये है कि अगर आप यहाँ से कुछ भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो चीज पे कुछ वैल्यू एडिशन जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री में होना चाहिए। इफ वी आर एक्सपोर्टिंग ज्वेलरी, अगर हम ज्वेलरी इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू दुबई, यूएई समवेयर, तो हमें इंडिया में एक वैल्यू एडिशन परसेंटेज अचीव करनी होती है। और साथ ही साथ हमारा चेंज इन टैरिफ हेडिंग मतलब क्या होता है, ये जो HSN है ये 8 डिजिट का एक HSN होता है। देयर आर सो कस्टम्स में एक पूरा टैरिफ शेड्यूल होता है, जहाँ पे देयर इज अ 2 डिजिट व्हिच इज कॉल्ड एज चैप्टर, देन 4 डिजिट को हेडिंग बोलते हैं, 6 डिजिट को सब हेडिंग बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट लॉ की ये है कि आपका चेंज इन सब टैरिफ हेडिंग, यानी आपका 6 डिजिट लेवल का HSN चेंज होना चाहिए। अब ये चेंज कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्ड इंपोर्ट करते हैं और आप अगर गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हो, तो जो गोल्ड का HSN क्लासिफिकेशन 6 डिजिट लेवल पे है वो अलग होता है, और जो ज्वेलरी का क्लासिफिकेशन है वो अलग होता है। मतलब आप एक मैन्युफैक्चरिंग या मेकिंग एक्टिविटी कर रहे हो। द प्रमोशन और द बेनिफिट बिहाइंड दिस सेपा या सेपा का है कि आपको कुछ वैल्यू ऐड या कुछ एक्टिविटी करना है। आप सिंपली कुछ चीज लेके और उसको सीधा सप्लाई करोगे, दैट्स
वो इस सेपा का ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपकी कंट्री में आपको वैल्यू ऐड करना है और वैल्यू ऐड के साथ ही साथ आपका चेंज इन हेडिंग होना चाहिए जो कि एक प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से हो। So, like my colleague explained, that there needs to be a primary processing activity, there needs to be a value activity. Processing activity is seen in that change of classification. So the entry जो CTHH में है, तो आप देखेंगे कि when you put jewelry of gold, which is plain jewelry, unset, without any diamonds or precious stone, classification entry है, that is 71131910. But when you purchase gold and it's a unwrought raw gold, the classification of that is 71081200. So therefore, in any export of jewelry of gold without any settings, there would be a change in the classification entry. तो RO जो criteria है, तब उसका पहला वाला उससे meet हो जाता है. That means that the first criteria that there should be a change in the classification entry at the subheading level you meet. That is the functional criteria. You also have a financial criteria which looks at what is the financial value addition which has occurred for that product, which also means that if you have purchased gold at X amount per gram, let's take it at 5,000 rupees per gram, and what you are selling is at a total price of 5,500 rupees per gram plus the making charges, then you see the FOB value, so what value of your sale from India, the FOB value should be at least 3.5% more than the price of the gold which you paid for in terms of raw material. So I'm going to pause here to see if we are all on the same page, especially in this table, that the export price needs to be, at least for gold jewelry without any settings, at least 3.5% more than the cost of raw materials you have. That is fundamental principle. There's some detailed rules which come across, and that is an issue that you will need to meet, and criteria you will need to meet at all exports. Now, when you're in plain jewelry exports, the value addition norm is 3.5%. Value add hona chahiye. But moment you export jewelry set with pearls, where the classification entry India HSN will change to 71131920, the value addition that you need to show in your, from a financial perspective, is 6%. If you are exporting jewelry with gold set with diamonds, the value addition for the FOB price and the raw material price that you have is 7%. So that will change depending on what is the item you are exporting, which is why I said it's very important to focus on the India HSN, which is changing in each case, the description of the product, and also the rules of origin, because for each of them, there is a different value add now. Again, if you come to the fifth row there's a jewelry of platinum, which is unstudded without any set items in it, or set stones. There, the value addition norm is 3.5% at par with the unset jewelry. In each case, you need to know what you are importing, what you are exporting, and which value addition norm do we need to fulfill. Now, what I'd like to also highlight is that this is a more simple understanding of the value addition norm. Now, how do you prove the financial criteria of 3.5% to 7% value addition norms are met, for which there are two objectives you have, two broad options you have, and we'll. Oscar, if you permit, Yes. can I add one? Yes, of course. So can you go back?
रश्मि तो जिस कॉस्टम ने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि ये इफ का कंडीशन है, अगर आप वैल्यू एडिशन 3.5%, 6%, 7% करते हो पे, तो आपको यूए में ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा 0% का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो अगर आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू एडिशन अलग अलग है। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी पे 3.5 है, जो स्टडेड ज्वेलरी विद पर्ल्स है वो 6% है, जो डायमंड्स के साथ है वो 7% है। अभी इसका रीजन क्या है कि ये वैल्यू एडिशन अलग अलग क्यों है? जब रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिए थे, हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, जो शायद सभी एक्सपोर्टर्स फॉलो करते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट हमने रेफर किया और वहां देखा कि गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है वैल्यू एडिशन नॉर्म्स में। वही का ही पैरा हमने यूज किया है, रेफर किया है, and all these value addition norms are in sync with the India's foreign trade policy document. So this is the reason, that's why you are seeing a variation in value addition norm, number 1. Number 2 is जो आपके पहले वाले FTAs हैं, जैसे ASEAN FTA है या APTA FTA है, उसमें क्या लाइक चैलेंज था, उसका लिमिटेशन क्या था कि वैल्यू एडिशन नॉर्म्स सारे प्रोडक्ट्स में वो प्रेफरेंशियल ड्यूटी देते हैं, लेकिन 40% वैल्यू एडिशन के साथ देते हैं। और आपको मालूम है कि प्लेन में, स्टडेड में 40% का वैल्यू एडिशन होना पॉसिबल नहीं होता है हैंडमेड ज्वेलरी में या ज्वेलरी प्रोडक्ट में। तो इसीलिए कभी भी हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स उन FTAs का फायदा नहीं उठा पाए। अभी हमारे एक्सपोर्टर्स इस FTA का बेनिफिट उठा पाए, इसीलिए हमने वैल्यू एडिशन वही रिकमेंड किए जो एक्चुअल में क्या है, रियलिस्टिक है और फिजिबल है एक्सपोर्टर्स के लिए। तो यू विल फाइंड सच वेरिएशंस। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अभी भी आपको क्या मिलेगा, जनरल रूल मिलेगा। जनरल रूल मतलब CTSH प्लस 40% मिलेगा। बट हमने गवर्नमेंट को जो कन्विंस किया है वो मेजरली गोल्ड प्रोडक्ट्स के लिए किया है। Hope we are very much clear. We, Kaustav, Ketan and myself, we all have tried to make you understood कि इस साइट का बहुत importance है। Hope you all are very much clear about this. Thank you. ये हमारे इंडस्ट्री के हैं तो हमें मालूम है कि वो कमोडिटी को किस भाषा में बहुत जल्दी करते हैं। I think so studded jewelry कहते ही सबको क्लियर हो जाता है। So I'm very sorry. No, I need to understand the lingo. Yeah. Really going nice. Thank you. So if I move on and we looked at the gold jewelry segments as a category, now if we go on to diamonds, the diamond segment is a bit unique. What is unique is that raw diamonds which are falling under the rows 1 and 2 already have a nil duty rate of 0% at Dubai. So all imports, whether it is coming from India or not, that is also not offered to any duty concession because the rate is already nil. But if you look at the 5th row here, fundamentally diamonds which is worked and which is polished, which we refer to as CPD, the category attracts a customs duty in UAE of 5%. And the SIPA with India now allows for a nil duty rate of 0% for imports of CPD from India, where Indian parties are exporting the CPD, where there is a value addition change of 6%. Exports of CPD from India, where we have a very substantial amount of the market of about 45% of the imports of CPD into Dubai, where the value addition norm has been prescribed at a 6% along with the tariff entry change, because you will see that a raw diamond, on top of the table that is specified at the first row at is 7102 1000, and what you will export as a CPD, which is in the 5th row, is 7102 3910. So HSN classification का entry का criteria meet हो जाता है. The second criteria you have to meet is that you need to prove a 6% value addition which happens in the process of the export. To the next point
is that we right now looked at the export side and the revenue side. We are also going to look at the expense side or the import side, because most of the raw materials coming into India by way of imports. This is also a very unique feature of the SEPA with UAE, where import of gold from Dubai, which does not need to be originated in Dubai, but needs to be certified in terms of quality, etc., and imported from Dubai. The customs duty rate of that to a particular quantum will reduce over a particular period, which means that you have a concessional rate of 1%, and that 1% concession will be allowed to 120 metric tons of gold, leading up to year 5 to 10 of 200 metric tons of gold. So this is a quantitative criteria ki India mein customs duty rate on gold is on the gold import is 10%. 10%. What will happen is that for import of golds up to a quantity prescribed up to of 120 tons, in the first year, we'll have a concessional customs duty rate of 9%. The next year, the concessional duty rate of 9% will continue, but the quantum will go up to 140. This quantum will continue to increase each year. So therefore, the total volume of gold that you will have capable of being imported into India, which will be at a 1% lower rate than what you would have otherwise paid for, will be available up to year 10 of this SEPA. Therefore, जो आपका जो imports होगा gold का, उस पे जो custom duty लगेगा वो 1% कम होगा up to a total import of 200 tons each year. पर अगर मैं इसको summarize करूँ जो आ रहे थे is that हमने अभी तक की जो स्लाइड देखी, हमने देखा कि हम जब दुबई को या यूएई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे यूएई के एक इंपोर्टर के लिए ड्यूटी कम हो जा रही है। अब ये हो गया है कि हम जब इंडिया में कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ये वही बात आ जाती है कि बायलैटरल ट्रेड क्या है। अब हम यूजुअली हम बाहर से क्या इंपोर्ट करते हैं, अगर मैं गोल्ड और डायमंड सेक्टर दोनों देखूं, या तो हम रॉ गोल्ड इंपोर्ट करते हैं या तो हम रॉ डायमंड्स इंपोर्ट करते हैं। रॉ डायमंड्स में आज की डेट में इंपोर्ट ड्यूटी वैसे ही इंडिया, पर अगर आप रॉ गोल्ड जब इंपोर्ट करते हो तो आज आपको ड्यूटी लगती है लेट्स से 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब ये जो 10% है, इसमें 1% का रिडक्शन हो जाएगा अगर आप यूएई से गोल्ड इंपोर्ट करोगे, और ये 1% का रिडक्शन एट अ टन लेवल उन्होंने एक फेज्ड मैनर में इसको बढ़ाते गए। आज की डेट में हम करीबन 60-70 टन ही गोल्ड इंपोर्ट करते हैं दुबई से, यूएई से। नाउ दे हैव गिवन अ वेरी गुड कोटा ऑफ, आई मीन इट गोज अप टू 200 टन तक जाता है, बट अभी ईयर 1 ऑनवर्ड 120, फिर 140, फिर 160 टन, ऐसे ये बढ़ता जाएगा और अपनी 1% कस्टम ड्यूटी विल गेट सेव्ड। Similarly, jewelry, while this is एक छोटा क्वांटम ऑफ इंपोर्ट, हम यूजुअली इतनी ज्वेलरी इंपोर्ट नहीं करते, बट ज्वेलरी इंपोर्ट में उन्होंने 1% अप टू 2.5 टन 5 साल के लिए वो रेट ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, 19, 18, 17 ईयर 1 एंड ईयर 5 to 10 वो 15% रेट है। तो ये ब्रॉडली हमने पहले देखा कि एक्सपोर्ट साइड पे क्या बेनिफिट हो रहे थे जब हम दुबई यूएई में एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट साइड पे क्या बेनिफिट हो रहा है। So any special levels of design jewelry which is not Indian based, which is the sources inside India, which you want to import into India, for which the customs duty rate is right now 20%. At import from UAE will, on a staggered basis over 10 years, will go down from approximately 5% each year. There will be a 0.5% reduction on the customs duty rate. So imported jewelry में भी आपको एक concession मिलेगा, for which the customs duty rate will go down each year. Yes. Just आपके साथ भी मेरी 200 टन है, सभी को मालूम है, ये नॉमिनेटेड एजेंसीज या बैंक्स के थ्रू आता है। पर क्या एक क्वेश्चन आ रहे 200 टन कैसे, या
अल्टीमेट एंड यूजर को बेनिफिशियरी मिलेगा, कब मिलेगा, ऐसा नहीं हो कि ये कुछ हैंड लोगों के पास चला जाए या 200 टन बार में कंज्यूम हो जाए। तो मेक इट श्योर जीजेपीसी के साथ कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं, लोगों का एक डिस्कशन चल रहा है कि ये जो 200 टन आएगा ये कब आना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग एक महीने के अंदर सारा कंज्यूम कर ले। सो इट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट पीरियड आल्सो। सो इसके लिए डिस्कस की कोई भी नया इकोनॉमिक चेंज आता है तो उसके साथ तो वो मैकेनिज्म हम लोगों का इन प्रोसेस में है विद that will come. Some amount of fair play in the Yes. extraction process. Yes. So it should be a very transparent kind of procedure. Rashmi ji, Ramesh here. Yes, sir. Would just like to add that what you said is correct. There is a mechanism being planned to make sure that this is a transparent methodology, and the Commerce Ministry is working on that. That modalities will be worked out, and of course, this is the first time gold is being imported at a concessional rate under the tariff rate quota. It is a new thing for the government also. Government के लिए भी नई चीज है, तो जरूर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा safeguards रखेंगे ताकि लोग people are able to get it at the right price across India. It should not be that somebody corners it in one place and takes it. तो इस तरह का safeguard जरूर आएंगे, जो procedures जो अभी लागू करेंगे उसमें से पता चलेगा जो May 1st के बाद. Thank you, sir. Thank you so much for your update. I mean, even a small scale manufacturing advantage of this. जैसे बताया कि हम इस तरह कर रहे हैं, तो definitely it will be at the same level. That's nice. So moving on, now we talked about the rules of origin and the financial criteria of you meeting some prescribed. Now the rules of origin which have been prescribed lay down certain norms as to how and mechanism from a calculation of value. How do I calculate the value addition norm of 3.5% to 7%, which has been, and there are broadly methods of calculating. First method, which is referred to as the direct method, is where provide what is the cost of the originating material, labor cost, and direct overhead cost in your manufacturing of every item which is exported, because the rules of origin certificate you apply is for each shipment. So for each shipment, you should be able to calculate what is the underlying component originating material, what is material sourced from India. From the diamond sector, let's look at the plain jewelry sector. The originating material in India will be extremely less. The major amount of items reflected here is the direct labor cost and the direct overhead cost for your operating plant. And then that will be divided by the FOB value. It should also include the component of profit, and that is part in the form that we prescribe. So all the labor, operating and value addition costs you have in terms of working on the material, your factory cost is what needs to be prescribed here, and that as divided by the FOB value of export should be equivalent to about 3.5% to 7%, depending on the category of exports. The same way, like you have a direct method, there is a reverse method as well, which is called the indirect method. The indirect method takes the reverse manner of calculation, where we see hamara FOB value of exports kya hai. So if you have a jewelry, plain jewelry, FOB value of exports is 20,000 rupees. Then you calculate and you subtract from it what is the non-originating material. Non-originating material will be all material
you have purchased fundamentally the raw materials. So if you have raw materials purchased of gold of 15, then you will subtract 20,000 and 50,000 from that, which will be 5,000. On that, you divide it by the FOB value of exports. Value of export that we said is 20,000. So your value addition norm will be 20% there, just as a matter of just. Effectively, we have to see for you which is the better, more clearer, more simpler method of calculation, because the documents you submit while asking for the certificate needs to have these details for each export. They need to also withstand scrutiny, because the certificate, once it's issued here, can be something which can be questioned and scrutinized overseas in Dubai as well, if there is a particular query which is raised. Therefore, this certification should be based on a clear, documented set of financial information. Going to some situation where there are slight amount of complexities, and try and translate it to something which is a very strong set of financial documents you submit to prove what your value, and that can range from, like I said, 3.5 to 7%. Which method is better for you can depend on multiple factors. One complexity we expect here is that when the exporter is a merchant exporter and exporter is not the manufacturer, you may have a supporting, the person who is the person who is filing the FOB value and filing the shipping bill. Now the exporter will not have transparency into what is the cost of, depending on whichever method you go, he may not have transparency and availability on certified documents as to what the supporting manufacturer's cost of labor is, cost of overheads is as well, or what the supporting manufacturer's cost of raw material is as well. But we think that we can find a solution here, because the industry, the way it operates, is also dependent on the value and the weight of gold which is there, the value and the items of stones which are prescribed. So your pricing on the revenue side, on the sales side, is also dependent on how much gold is there in a bangle, how many diamonds are there in a bangle, and what is the each value of it. So you can work back to the costing of that, which has been fit into the product when you're supporting the manufacturer. Is because there will be a pricing mechanism there as well. We also know that quite a few of the supporting manufacturers in this sector work on a cost plus basis. So there is a level of transparency in the costing there, but we'll have to see on each case to case basis how it happens. तो बेसिकली अभी हमने जो समझा कि कहाँ पे बेनिफिट आ रहा है, एक हमारा एक्सपोर्ट बेनिफिट है, एक इंपोर्ट बेनिफिट है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि वो बेनिफिट के लिए जो हमने रूल्स ऑफ ओरिजिन देखे, यहाँ पे हमने देखा कि CTSF चैप्टर हेडिंग चेंज, सब हेडिंग चेंज होनी चाहिए और एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। सब हेडिंग चेंज होना मतलब कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मेकिंग एक्टिविटी करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी सब हेडिंग चेंज हो जाती है। बट जो नेक्स्ट पॉइंट आती है कि वैल्यू एडिशन कैसे करना है। अब वैल्यू एडिशन के लिए दो मेथड बताए गए हैं, एक डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप क्या लेते हो, आप लेते हो आपका कॉस्ट ऑफ ओरिजिनेटिंग मटेरियल, आपका लेबर कॉस्ट, आपका ओवरहेड कॉस्ट, और आप उसको डिवाइड करते हो आपकी FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। नाउ ओरिजिनेटिंग और नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल क्या है, अगर मैं समझाऊं, ओरिजिनेटिंग मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो आपकी कंट्री में ओरिजिनेट होता है, यानी इंडिजीनियसली अवेलेबल होता है। बट अब जब हम जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे देखें, हमारा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल बोलो, गोल्ड बोलो, डायमंड बोलो, पर्ल, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इंडिया में ओरिजिनेट होता है। तो मेजर जो हमारा मटेरियल होता है वो नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल होता है। दैट मींस हम इंपोर्ट करते हैं, स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, हम कहीं से ही इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी कंट्री से ये सब रॉ डायमंड, गोल्ड हम सब इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से वो हमारे लिए नॉन ओरिजिनेटिंग मटेरियल बन जाते हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में, दोनों ही मेथड में आप
ये जो मेथड का एनालिसिस है, आपको कौन से मेथड में जाना चाहिए, ये कुछ हद तक डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई चेन साइकिल क्या है, आप खुद मैन्युफैक्चरर हो या आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे ऑपरेट कर रहे हो, या कि आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, किसी मैन्युफैक्चरर के थ्रू करवा रहे हो। बिकॉज हर एक मॉडल में जो लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगा, बिकॉज कई बार क्या होगा, जो गोल्ड इंपोर्ट करता है, बिकॉज जब यहाँ पे स्क्रूटिनी होती है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि प्रोसेस क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये पूरा जो बेनिफिट मिलता है आपको एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मिलता है, which is called as certificate of origin, which means कि अगर इंडिया कोई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू कर रहा है, मतलब ये गुड्स इंडिया से ओरिजिनेट हुए, और उस ओरिजिनेशन का एक क्राइटेरिया है कि आपने वहां पे चेंज इन सबहेडिंग करा है और आपने एक वैल्यू एडिशन करा, दोनों चीजें अचीव की है तो गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देता है, which is called as certificate of origin। अब वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे ही आपका इंपोर्टर उस कंट्री में, यूएई में, दुबई में, कहीं पे भी वो आपका बेनिफिट लेगा। To make an application for which will cover in the next slide, there is one important और एक जरूरी एस्पेक्ट जो एप्लीकेशन का है कि आपको वैल्यू एडिशन दिखाना है। आप वैल्यू एडिशन डायरेक्ट मेथड से दिखाओगे या इनडायरेक्ट मेथड से दिखाओगे, वो एक पूरा एनालिसिस लगेगा, बिकॉज आप कोई भी मेथड में जाओगे आपको डिपार्टमेंट को समझाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिस को समझाना पड़ेगा कि ये वैल्यू एडिशन आपने किया है, इसलिए आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपने अगर किसी से थर्ड पार्टी से गोल्ड परचेज किया तो वो प्राइस हो गया, या आपने डायरेक्ट इंपोर्ट किए, तो ये पूरा, बिकॉज ये कॉस्टिंग एस्पेक्ट है, राइट। आपको अगर वैल्यू एडिशन दिखाना है, कल को कोई उठ के बोलेगा कि मैंने वैल्यू एडिशन किया है, बट उसने आइडियली सिर्फ किसी से ज्वेलरी ली और ज्वेलरी बेच दी, आई मीन इन अ सेंस ट्रेड किया है इंपोर्ट करके, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इंडिया लेवल पे वैल्यू एडिशन दिखाना है, एंड अगर इंडिया लेवल पे भले आपने नहीं किया, आपने जिससे लिया था उसने किया है, तो आपको उससे कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। तो केस टू केस बेसिस पे क्या लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो एक एनालिसिस है, बट इन प्रिंसिपल अगर हम इंडिया में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं एंड अगर हम वो डॉक्यूमेंट ट्रेल क्रिएट करें, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन का, हमें ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट मिलेगा, जिसके बेसिस पे हमारे कस्टमर्स जो बाहर हैं वो ड्यूटी बेनिफिट देते हैं। Right now we looked at यहाँ more पे methods of एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक बताना चाहता हूँ एक चीज। एक्चुअली व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड वाज अबाउट वैल्यू एडिशन इन इंडिया। वहाँ पे इस सीपा में एक प्रोविजन है, उसका नाम है बाइलैटरल क्यूमुलेशन। इसका मतलब है अगर ओरिजिन यूएई का भी हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, तब ओरिजिनेटिंग मटेरियल माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाइलैटरल क्यूमुलेशन का मतलब है आप गोल्ड ले सकते हैं इंडिया का या गोल्ड ले सकते हैं यूएई का, किसी के भी पार्टीज का यूए गोल्ड है तो माना जाएगा ओरिजिनेटिंग मटेरियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू अंडरस्टैंड। Only if it comes from some other countries, say Switzerland, South Africa, these countries, then it will become non-originating gold. That is a very important distinction which we need to understand, because whatever gold is coming into India, जहाँ से UAE से आ रहा है, वो originating ही माना जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है इस सीपा में, ये बहुत बड़ी बात है। और ये दोनों जो फॉर्मूले अभी डिस्कस हुए हैं, दो तरह के फॉर्मूले हैं, एक डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आप यूज कर सकते हो जब आपका जो रॉ मटेरियल गोल्ड वगैरह उसका आप ट्रेसेबिलिटी है, आपके पास बिल ऑफ एंट्री है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सीधा उसका वैल्यू आप अराइव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड आपको फायदा होगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री ट्रेल नहीं है कि मटेरियल है ओरिजिनेटिंग मगर आपके पास डिटेल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इनडायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शनल है, आप कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ले सकते हैं। थैंक यू। we understood what are the methods of calculating value add. Now, what is the process of making this translate into you getting the certificate of origin in your hand? That is the fundamental documentation based on which the export that you make to the UAE will be entitled to the concessional rate from 5% to 0%. All the steps that we're talking about until now culminate into you having a certificate of origin in your hands at the point of the export. So if I break it down into steps, prior to the exports, preferably prior to the export, the exporter needs to make an application to the
the licensing authorities, and there are three authorities which have been prescribed right now. Licensing authorities for grant of the COO prior to the export. We'll take you through the application form. That application form needs to have all these details depending on which of the option you selected. If you selected the direct option or the indirect option, for every shipment of export you have, for every invoice you raise for which you are requesting and applying for a certificate, those set of documents, depending on which option you took, the direct calculating option or the indirect option, that set of documents need to be kept with as supportings to the application and filed with the licensing authorities. That is step number one. Step number two is that there will be a level of scrutiny and review of the documentation that you submitted with the application, based on which the certificate of origin will be issued to you by the certifying authority. Step three is that you can make an export of goods. Now you should note that we have said here step two is followed by step three. In most cases, step two can be conjoined with step three, but in your case, the way your industry operates, you're not exporting items by sea. It's not that you have a 2-month period for which from point of shipment to point of import. Your will happen in the same day or the next day. So therefore, because the certificate of origin needs to be given by the importer, which is, if you see step 4, at the point of imports in UAE, you should have the certificate in your hand at the point of export. So you don't have a 2-month lead period. आपके लिए सिर्फ एक दिन का lead time रहता है. Therefore, at the point of export, you should have the certificate in hand, which in step 4, that at the point the bill of entry is filed for the import in UAE, that certificate will be there and ready to be filed for the bill of entry with the bill of entry, because without that certificate, the nil rate of duty for that shipment will not be allowed to you. That is the standard 4-step process you will have. In exceptional circumstances, step 5 and step 6 will come if the new customs authority in UAE choose and select to scrutinize the certificate you submitted. If they have some queries and they have any further queries, if there's an investigation or a verification process, they can ask for the underlying documentation which you submitted in step 1 from the certifying authority to check the accuracy and the validity of all the information which has been submitted. Step 5 and 6 are exceptional situations, but step 1 to 4 is something you will need to always follow in cycle in each export you will have. अभी तक हम लोग ने समझ लिया कि बेनिफिट क्या है, क्या कैलकुलेशन फॉर्मूला है. नाउ अभी हम प्रोसीजर पार्ट पे आ जाते हैं कि इस बेनिफिट को लेना कैसे है. तो बेनिफिट लेने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ जो ओरिजिन है ये कुछ नोटिफाइड एजेंसीज ही इशू करती हैं. आपके केस में एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है और डीजीएफटी जो हमारे. इसका एक प्रोसेस है, एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होता है. आप उस एप्लीकेशन में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि क्या लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, बट ज्यादा करके आपके एक्सपोर्ट की कमोडिटी डिटेल्स एंड आपका एक इनवर्ड साइड का जो आपका प्रोक्योरमेंट का कुछ हद तक का डेटा, आपको ये डेटा देना होता है. आप किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, कमर्शियल इनवॉइस, ये सारे सपोर्टिंग देख करके आपको एक इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन फाइल करना है. वो एप्लीकेशन होने के बाद, बिकॉज ये एप्लीकेशन अगर स्पेसिफिकली जब पहली बार जाएगा तब ऑफिसर विल हैव टू डू, वो लोग कुछ स्क्रूटिनी करेंगे, वो देखेंगे कि आप जो कह रहे हो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, वेदर वो पूरा सही लग रहा है या नहीं सही लग रहा है. उस पे शायद क्वेरी आएगी या एक टू एंड फ्रो होगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लेवल और क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कैसा है. एक बार आपने वो डॉक्यूमेंटेशन दे दिया और वहां पे रिव्यू हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की कॉपी मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिकली भी मिलती है, फिजिकली भी मिलती है. आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की कॉपी आपके कस्टमर, यूएई कस्टमर को देनी है. वो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की कॉपी के बेसिस पे वहां पे जब इंपोर्ट क्लियरेंस करेगा, उसको एक प्रेफरेंशियल रेट जो हमने देखा 5 बिकमिंग 0, उसका बेनिफिट मिल पाएगा. और जो
जैसे कौस्तुभ ने बताया कि जो स्टेप 5 और जो स्टेप 6 हैं वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पे यूएई के कस्टम अथॉरिटीज को लग रहा है कि शायद ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है इसमें ऑथेंटिसिटी चैलेंज है या जो डेटा है उन्हें कुछ और है कि ये वैलिडेशन बराबर नहीं लग रहा है, तो वहां पे शायद कुछ लेवल ऑफ स्क्रूटिनी हो सकती है। बट इन अ नॉर्मल कोर्स आपके ये 4 स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आप एप्लीकेशन करोगे, आपकी वेरिफिकेशन होके आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, देन आपका एक्सपोर्ट होगा। नाउ एक प्रैक्टिकल थॉट यहाँ पे ये है कि यूजुअली पहले सर्टिफिकेट में कई बार टाइम लग जाता है बिकॉज डिपार्टमेंट को भी आपका बिजनेस समझना होगा और आप एक्चुअली वैल्यू एडिशन कर रहे हो या नहीं। बट एक बार आपका वो प्रोसेस सेट हो जाएगा, जब आप 1-2 सर्टिफिकेट ले पाओगे, आपके एक्सपोर्ट क्लियरली हो जाएंगे, उसके बाद ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा। 24 आवर्स 48 आवर्स में भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आ जाता है। कई बार हमने देखा आपने सुबह ऑनलाइन फॉर्म भरा, आपका शाम को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आ गया। इस लेवल पे आपकी एफिशिएंसी से आप पहुंच सकते हो अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन एंड आप एक प्रोसीजरली चीजों को सेट कर, एंड देन बेसिस दिस सर्टिफिकेट योर ओवरसीज कस्टमर को बेनिफिट आई मीन सेव हो जाएगी एंड यू विल आल्सो हैव अ वेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा आपका बिकॉज़ आप उसको ड्यूटी फ्री इन अ वे प्रोवाइड कर पाओगे। And one of the points that we are highlighting is that the system and the process you put in place now is something you should view as an investment for your business, because right now you're looking at UAE. In your future you will have a similar FTA with Australia as well, which is just around the corner. I think the team and ma'am has been a part of that process. What process you follow now will get replicated for the exports to Australia, which is a very premium, and hence we should also put in place a similar scrutiny there and a similar documentation practice. One thing I highlight that the Australian tax office, we know from our international experience, is very fastidious. They are very strict and they do a high level of scrutiny. So what are the information that you require at the point of filing of the application for the certificate of origin? If you remember what we said, the description of the goods to be exported, that is something you need to provide. What is the HS code at the 6-digit level of what is the export you have? That was point number 2 in the list we looked at. FOB value of export. ये आपको, you can only press the FOB value. In some other products you can put the ex-factory value, but that option is not there for gems and jewelry sector. There you can only put the FOB value of export. Now is where the costing related details come in, depending on which option you choose. Your description of the components, whether you use gold price you're going to give or you're going to give the cost there, that will be submitted by you depending on which option you choose, the direct method or the indirect. You will also have to put the supplier's name for each of the respective raw materials that you're prescribing. So if you're going into the indirect method and you're saying that you have purchased gold at 5,000 rupees per gram, the supplier of the gold to you at 5,000 rupees per gram and the invoice number as well, that needs to be placed there, because that should be kept. Your submitted documentation and the calculation should be capable of being. Number 2 is that the approach you take here should be the same as what your financial accounting practices. Some companies, for looking at the cost of manufacture, take an average price of gold across the past financial year. Some companies follow a first in, first out principle. The principle you follow in your financials while reporting your numbers to the Ministry of Company Affairs each year and your financials, that principle should be the same here. It should not that you follow first in, first out somewhere else and you take an average cost of pricing. Then we talked about the quantity and unit of goods exported and the total CIF value. So you need to provide the FOB value and CIF value as well. Details or total value of the non-originating materials, labor costs, overhead costs that we talked about. Description of manufacturing process. What is the manufacturing process which is undertaken if you are a self-manufacturer? And then you'll have to give the calculation sheet as to how you have reached the value addition calculation percentage based on the
एकदम समराइज करूँ तो आपको बेसिकली एक एक्सपोर्ट शिपमेंट जब आप करते हो तो आपका सब एक कस्टमर होता है, कस्टमर की डिटेल्स, गुड्स की डिटेल्स हो गई, आपका गुड का प्राइसिंग हो गया, ये तो एक आपका आउटपुट लेग हो गया जो आपके पास एनी विच केस रेडीली अवेलेबल होता है बिकॉज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको एफओबी वैल्यू मालूम है, कमर्शियल इनवॉइस कस्टमर ने। इसके अलावा आपको ऑल्सो फोकस करना है आपके प्रोक्योरमेंट रिलेटेड डिटेल्स पे कि आपने वो शिपमेंट एक कस्टमर के लिए जब किया तो उसके लिए आपका प्रोक्योरमेंट डेटा क्या था, आपने किससे गोल्ड लिया या आपने लेबर का कॉस्ट क्या इनकर किया, आपको ये प्रोक्योरमेंट साइड की चीजों को भी ध्यान रखना है। एंड जैसे कौशल बता रहे थे बिकॉज प्रोक्योरमेंट में कॉस्टिंग और उसके बेसिस पे ही आपका वैल्यू एडिशन निकलेगा, तो जो प्रिंसिपल आप आपकी अकाउंटिंग बुक्स में फॉलो करते हो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या आईएफआरएस के हिसाब से कि आपका स्टॉक कैसे वैल्यू होना चाहिए, वही सिमिलर प्रिंसिपल आपका जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या हम जब शिपमेंट के लिए निकालते हैं तो वो उसी प्रिंसिपल से निकलना चाहिए कि आपने कितना गोल्ड यूज किया है, अगर एक ज्वेलरी बनाई है तो कितना गोल्ड यूज किया, उसका क्या वैल्यू है, तो ऑल दोस फैक्टर्स को ध्यान रखना है और उसके हिसाब से दिस इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड। आप एक एप्लीकेशन, तो मैं क्विकली सिर्फ ग्लांस थ्रू करवा देता हूं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम की एप्लीकेशन फॉर्म एज पर द अग्रीमेंट कैसा दिखता है। ये एक एप्लीकेशन एनेक्सर 3 ये जो सेपा है उसके अंदर का एक एनेक्सर है जहाँ पे हमने जो अभी मिनिमम इंफॉर्मेशन देखी है उसी को बस कॉलमनर वे में डाला गया है कि आपको डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने क्या एक्टिविटी करी है, आपने वैल्यू एडिशन का कौन सा मेथड फुलफिल किया है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, एंड आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आपने जो भी ये इंफॉर्मेशन दी है दैट इज टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आप जब ये इंफॉर्मेशन दोगे एक लेवल ऑफ शायद स्क्रूटिनी होगी, असेसमेंट होगी, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा। दिस इज द डॉक्यूमेंट बेसिस पे योर कस्टमर outside India will get the benefit. This has the details की goods होके इंडिया में ओरिजिनेट हो रहे हैं, में वैल्यू एडिशन फुलफिल हुआ है एंड देन किससे जा रहे हैं, कौन से कस्टमर को जा रहे हैं। बिकॉज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने कि हर ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है आपके हर एक कस्टमर और हर एक शिपमेंट वाइज होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक कस्टमर के लिए 4 महीने का एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन निकाल दिया। एवरी टाइम दैट यू सेल टू अ कस्टमर फॉर ईच शिपमेंट फॉर ईच कस्टमर यू विल हैव अ सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। The cost here, the raw material prices you have are fluctuating. It's not a standard price, especially. Hence, you can't. It's very difficult for you to use any past documentation. You need to continually attach itself to what the price is based on your accounting process of the actual raw materials which went into the product which is being exported. Labor cost as well, because labor cost doesn't fluctuate, but it moves in a particular. So, certificate of origin for us, like we are into a D2C market. So we have, it's not that we do a bulk shipment, but it's a direct to the client. So every transaction we would need a certificate. And would this benefit even my regular clients, not a institutional client, but a regular or small ticket size client can acquire this duty? Yes, yes. Whoever's filing the bill of a small company, a large company, entitled to it. So Individual also? Individual will have to check, but that will depend on the law in Dubai. I can check on that. Yeah, because my clients are individuals. They are not some company or small or large. They are just individuals. Because so we have some thought around this, wherein how for a B2C segment also we can look through. We have one slide on this. Take that particular aspect, how better we can look at it. Those situations where you have only a B2C presence, doesn't need to think or overlook at the structure of the organization too. So now I'll maybe request Gautam to kind of take it up. Thank you, Kaustav. Thank you, Ketan. I hope I'm audible. Yes, Gautam. Yes, you are. तो अभी जैसे हमने सुना इस स्लाइड में हम लोग सप्लाई चेन के बारे में बात करना चाहते हैं। जो आपकी सेक्टर में सप्लाई चेन है, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, और ये मैन्युफैक्चरर ज़रूरी नहीं है कि ये इंपोर्ट भी कर रहा हो रॉ डायमंड या गोल्ड जिस पे काम किया जाएगा। तो इस सप्लाई चेन में 2-3 और बॉटलनेक्स हैं। जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं, अलग से कोई इंपोर्ट कर रहा है और उस इंपोर्टर के बाद एक और एंटिटी है बीच में जो एग्रीगेट कर रही है इस गोल्ड को और या डायमंड को, और फिर
मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को दे रही है जो एक्सपोर्ट करेगा फाइनली दुबई में। इस पूरी सप्लाई चेन का बताने का मतलब ये है इसमें कि जो हमने सुना कि हमें बेनिफिट जब ये मिलना है 5% का दुबई में, सबसे ज़रूरी ये है कि हमें प्रूव करना है हमारी वैल्यू एडिशन इंडिया में। तो इस वैल्यू एडिशन के लिए हमारे पास दो रूल हैं। एक रूल हमारा है डायरेक्ट कॉस्ट का और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर मैन्युफैक्चरर can go back to the first person, which is the importer out here, and उससे डॉक्यूमेंटेशन और उसकी डॉक्यूमेंटेशन से गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर सकता है कि ओरिजिनल इंपोर्ट जो रॉ डायमंड का था वो यूएई से हुआ था, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट ली जाएगी उसकी वैल्यू एडिशन डिटरमिन करने के लिए। अगर वो ये नहीं कर सकता या ओरिजिनल इंपोर्टर अदर देन यूएई से इंपोर्ट कर रहा हो, तो हमें दूसरे रूल में फॉल करना पड़ेगा, विच इज इनडायरेक्ट कॉस्ट मेथड। और इन दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर हमें मैन्युफैक्चरर के एंड पे वैल्यू एडिशन देखनी है, तो अगर मैं इंपोर्टर के डॉक्यूमेंट से प्रूव कर सकता हूं कि फर्स्ट गुड्स आर फ्रॉम यूएई, मेरे लिए और आसान होगा 3.5 या 4% और 6% defined value addition prove करना. So the objective should be in this exercise that as a manufacturer, we should be able to go back to the original importer and establish that these goods have been imported from UAE if that is a fact, and that will help us opt for the direct cost method, which is much easier for us to establish the base value addition. So that is the whole primary objective which we want to derive. और उसके लिए जरूरी होगा कि ये मैन्युफैक्चरर को अपनी पूरी सप्लाई चेन की जानकारी होनी चाहिए, ओरिजिनल इंपोर्टर कौन है, एंड everyone would need to support each other to establish this value addition, because at the end जो बेनिफिट मिल रहा है मैन्युफैक्चरर को सब्सटैंशियल है। कस्टम्स ड्यूटी पूरी यूएई में वेव ऑफ हो रही है, और वो जो वेव हो रहा है, अगर 3-5% जो भी वेव हो रहा है, वो एज अ प्रॉफिट और अ मार्जिनल इंक्रीज मिलेगा मैन्युफैक्चरर को। सो पहला पॉइंट ये है कि we need to have a system to go back and trace the origin of the raw diamonds or gold which are imported by the importer if they are from UAE, and that will help us determine which method we need to use for claiming the benefit. So that is one. Second is that since our supply chain is so detailed, यूजली क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं एज अ मैन्युफैक्चरर मैं ये बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि मैं इंपोर्टर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ओरिजिनल इंपोर्टर तक, ना मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन दे पाऊंगा गवर्नमेंट को। उसका आंसर है यस। अगर आप ओरिजिनल इंपोर्टर तक नहीं जा सकते, तब भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स पे टू यूएई। उसके लिए आपको आपकी जो वैल्यू एडिशन होगी उसकी प्राइसिंग और उसका फॉर्मूला जो हम देखेंगे वो होगा हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट मेथड, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू से हम माइनस करेंगे आर लास्ट परचेज प्राइस। इस एग्जांपल में जो होगी, जो मैंने एग्रीगेटर से ली होगी प्राइस, उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा अपनी एज एन मैन्युफैक्चरर की एक्सपोर्ट प्राइस से। सो तभी भी मैं कर सकता हूं अगर मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूं और मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, या मैं एक्सपोर्टर हूं बट मेरे साथ काफी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर या जॉब वर्कर लगे हुए हैं, तभी भी मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूं। और उस केस में मैं जो मेरी परचेज प्राइस है इन एग्रीगेटर्स की, वो यूज करूंगा एज अ परचेज प्राइस, और उसको मैं अपनी एफओबी वैल्यू से माइनस करूंगा। सो अगेन इन समरी, 2 points which I would want to make here is overall there is a larger consensus which is required in this supply chain. There is more transparency which would be required in the supply chain for us to get the benefit of the free trade agreement and the concessional duty at UAE end. And for that,
the manufacturer should have visibility and, as Ramesh sir mentioned, traceability of the original bill of entry and import documents at the importer end. If that is not possible, then the manufacturer can still avail the benefit, taking the purchase price, which is the aggregator purchase price to the manufacturer in his costing. Also, जब आप ये देख रहे हैं स्लाइड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरर SCZ में है या डोमेस्टिक मार्केट में. ये रूल्स कॉमन है, इररिस्पेक्टिव ये मैन्युफैक्चर SCZ में होगा या डोमेस्टिक मार्केट में. तो हमारे माइंड में जो एक आता है कि SCZ वाले थोड़े और बेनिफिशियल हैं. हाँ, SCZ में बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर ड्यूटी इंसेंटिव्स, बट इस FTA और इस बायलैटरल एग्रीमेंट में SCZ को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया गया है. तो उस पर्सपेक्टिव से again SCZ या non SCZ are treated as power. Ramesh sir, you want to mention something? दोस्तों एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ. किसी ने पूछा कि वैट का क्या होगा UAE में, अगर वैट लगेगा कि नहीं लगेगा. एक्चुअली वैट इज अ सेपरेट टैक्स. कस्टम्स और वैट अलग अलग हैं, और FTA के अंतर्गत वैट का कोई संबंध नहीं है, बस कस्टम्स ड्यूटी का ही कनेक्शन है. इसलिए वैट से कोई मतलब नहीं है FTA के साथ. अगर वैट लागू है तो वैट लगेगा, FTA के से कोई मतलब नहीं है. तो FTA में जो एग्जेम्प्ट होगा वो कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्प्ट होगा, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी. यही बेसिक डिफरेंस है. और जस्ट टू इस स्लाइड पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा फोकस हम बार बार डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट मेथड के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि there will be a government agency which will certify what methodology you use, and there will be a certificate of origin which will be issued. ये certificate of origin is the base and only document जिसके बेसिस पे आपको ये बेनिफिट मिला जाएगा. और हिस्टोरिकली अगर हम दूसरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स देखें एंड उससे कुछ एक्सपीरियंस ड्रॉ करें, दूसरी साइड में जो इंडिया ने इंपोर्ट कर रहे हैं, से थाईलैंड से काफी FTA था इंडिया का, और इंडिया ने काफी चीजें इंपोर्ट करी हैं थाईलैंड, वियतनाम और दूसरी एशियन कंट्रीज से. ये एक्सपीरियंस रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड इंक्वायरी टू डिटरमिन कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक फॉल्स डॉक्यूमेंट था और ये गलत डिटेल्स के बेसिस पे बना गया था. और उसके बाद उनने जो इंडियन इंपोर्टर्स थे उनसे वापस ड्यूटी मांगी है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज. सो इसीलिए एक ये एक्सपीरियंस हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरी गवर्नमेंट भी, UAE वाली भी, जब ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जाएगा वो भी इक्वली इसको ध्यान से देखेगी और इवैल्यूएट करेगी कि ये जो हमने मेथड यूज किया है और इसमें जो हमने डिटेल्स दी हैं वो एक्यूरेट और करेक्ट है कि नहीं. तो ये एक इंक्वायरी या एक रिव्यू बाय द कस्टम्स अथॉरिटी इन UAE पॉसिबल है. ये पहले दिन होगा या 2 साल बाद होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है, बट हमारे इस जर्नी में जरूर होगा एक ना एक टाइम. इसीलिए हमें कोशिश और हमारा इंडेवर होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ट्रू एंड एक्यूरेट हो. To the point which Gautam correctly made is that like we are now on the years that we have access, one of the challenges is faced that once there is a scrutiny and some malpractice is found or a mistake is also found, but which is due by the tax office, you can get blacklisted as well. So one particular step can have a long-term impact where that exporter gets blacklisted and that certificate of longer. We need to be very mindful of the quality of the documentation we submit. Thanks, Costa. And एक लास्ट पॉइंट इस स्लाइड पे कि जो डायग्राम देखा है आपने वो दिखाता है मैन्युफैक्चरर UAE को शिप कर रहा है. ये जो
एग्रीमेंट है इसमें एक और लीवरेज दिया गया है कंपनीज को, और कई कंपनीज का ऐसा मॉडल होता है कि इंडिया में गुड्स बन रहे हैं, दे विल देयर बायर इज सिटिंग लेट्स से इन सिंगापुर और एनीवेयर आउटसाइड यूएई, आप उसको बेचते हैं बट वो बोलेगा आप मेरे को बेच दो बट आप यूएई में भेज दो इस प्रोडक्ट को। तो इस एग्रीमेंट में ये भी लिवरेज है कि अगर आपके पास ऐसी सप्लाई चेन है कि आपका कस्टमर सिंगापुर या कहीं और है आउटसाइड यूएई, स्विट्जरलैंड, कहीं भी बोलिए, बट वो आपको बोल रहे हैं आप ये गुड्स दुबई भेजिए, तभी भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थर्ड कंट्री इनवॉइसिंग बोला गया है। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है उसमें स्पेसिफिकली ये कॉलम है, अगर आप चाहें तो उसको टिक कर दीजिए और आप अपने कस्टमर को बिल कर सकते हैं एनीवेयर आउटसाइड यूएई, और आपके गुड्स सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको डायरेक्टली यहाँ से गुड्स यूएई भेजने होंगे विद द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तभी भी आपको ये कस्टम ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा, and that can help you in increasing your profitability in India. So maybe अगर आपके कस्टमर्स, अगर आपका माइंड है कि नहीं हमारे कस्टमर्स तो स्विट्जरलैंड में हैं, हांगकांग में हैं, आप उनसे ये भी बात कर सकते हैं क्या वो आपका ये लेके दुबई भेजते हैं। अगर वो ऐसी सप्लाई चेन है आप डायरेक्टली दुबई भेज दीजिए और उनको बिल कर दीजिए स्विट्जरलैंड में, तभी भी उनको भी और आपको भी दोनों को बेनिफिट होगा। तो ये भी आप अपने ओवरसीज कस्टमर से बात कर सकते हैं अगर वो डायरेक्टली दुबई में नहीं है, बट उनका ये परचेज दुबई में जाता है। सो we can move to the next slide, and maybe Ketan, there are some questions, अगर हम देख सकते हैं स्टडेड ज्वेलरी पे एफटीए बेनिफिट है कि नहीं, एंड बार्स पे। maybe after the session हम कर Okay. So maybe मयूर का जो क्वेश्चन है वो अभी हम I think there is one slide, मयूर हम अभी आते हैं उस पे, लास्ट स्लाइड है। तो वेरी क्विकली इन समरी जो अभी तक हम बोल रहे थे, थोड़ी चीजें मैं रिपीट करूंगा, बट एज आई सेड बिकॉज ये हमारा पहला यूएई के साथ एग्रीमेंट है, बट ऐसे एग्रीमेंट इंडिया ने बहुत करे हैं, तो इसमें हमने बस थोड़ा एक्सपीरियंस डाला है कि आपको ये चीजें देखनी चाहिए। पहला पॉइंट, आपको अपनी सप्लाई चेन देखनी चाहिए। सप्लाई चेन दोनों तरफ से, आप खरीद कहाँ से रहे हैं और बेच कहाँ रहे हैं। खरीद कहाँ से रहे हैं, अगर आप कुछ दुबई से आ रहा है, या जैसे हमने बोला था, मैम ने भी बोला था कि देयर विल बी एजेंसीज नाउ व्हिच विल बी बाइंग गोल्ड एंड दे विल गेट अ बेनिफिट ऑफ 1%। क्या हम उन एजेंसीज से गोल्ड खरीद सकते हैं क्योंकि उन्हें 1% बेटर कंसेशन ड्यूटी में मिल रहा है, क्या हम उनसे बेटर प्राइस negotiate कर सकते हैं? So where do I purchase from? Can I purchase from those agencies in India who would be getting gold at a cheaper duty, or can I buy something directly from UAE? And when I export out, it need not be UAE, but अगर मैं मेरे एग्जांपल में स्विट्जरलैंड बेच रहा हूँ, स्विट्जरलैंड वाला UAE बेच रहा है, तो मैं उससे बात कर सकता हूँ और उसको बिल करूंगा और डायरेक्टली UAE में। तो ये पूरी सप्लाई चेन इंपोर्ट से लेके एक्सपोर्ट तक हम इवैल्यूएट करनी चाहिए टू सी वी गेन द मोस्ट बेनिफिट। यहाँ पे हमने बात करी सीओ की, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सो कंप्लायंस plays a vital role, which is at point number 2, 4. All what we are saying is कि we will have to maintain a robust documentation. ये documentation 5 साल तक रखनी होती है हमें, तो it is very essential for us to ensure that हमारे systems या जितनी चीजें हम अपने automation या अपने system से निकाल पाएं rather than manual entry, that will help us to maintain a robust document। और काफी चीजों के लिए हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बना सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हर एक्सपोर्ट, हर शिपमेंट के लिए चाहिए होगा। तो हर बार पहला टाइम अगर हमें 3 हफ्ते 4 हफ्ते लग रहे हैं, उसके बाद हमें 5 दिन 3 दिन लगने चाहिए। इट शुड बी दैट endeavor, or it should be that automated as we go along. So basically what we are saying here is that we should have a certain level of automation to pull out these details, certain level of standard operating processes, so that our
timeline is less as we go ahead, and our system and of maintaining documents should be robust because we need to maintain these documents for 5 years. We can, yeah. So this is my last slide. I think there are a few questions around this. There is opportunity for companies depending on your scales of operation, that आप यहाँ से आपकी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप यूएई में इसकी सब्सिडरी बना दीजिए, इसकी एक कंपनी बना दीजिए, यहाँ से आप यूएई में बेचें, आपको कस्टम ड्यूटी बेनिफिट मिले, और फिर आप आगे B2C एंड कस्टमर, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन कि क्या ये ड्यूटी बेनिफिट कस्टमर को भी मिलेगा, जैसे मैं दुबई में हूं और मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, वेल मेरे को दुबई की प्रोविजंस का इतना पता नहीं, बट इंडिविजुअल्स यूजुअली इंपोर्ट कर सकते हैं या कोई उनके लिए एजेंसी करेगी, बट एज अ बेटर मॉडल, अगर आपको अपने प्रॉफिट्स देखने हैं और आप अपनी कंपनी सेटअप करेंगे, तो ये जो ड्यूटी सेविंग है, आप उस कंपनी को में अपना प्रॉफिट पार्क कर सकते हैं, और वहां पे आप जो आपकी B2C प्राइसिंग है वो आज के दिन में जो है वो रह सकती है, आपको कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो आप ड्यूटी से बचेगा वो आपकी कंपनी में जा सकता है. सो यू कैन लुक एट दिस. हाँ, एक आपको कॉस्ट बेनिफिट देखना होगा, बिकॉज वहां पे आप जो कंपनी सेटअप करेंगे, अब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आने वाला है. दुबई में इनकम टैक्स नहीं था, बट अब प्रपोजल है कि जून 2023 से 9% इनकम टैक्स लगा करेगा. तो ये सेविंग वर्सेस द 9% इनकम टैक्स, इसकी एक आपको एनालिसिस करना होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज नेक्स्ट 5-10 इयर्स के लिए आप रखेंगे, नॉट फॉर अ फ्यू इयर्स. सो ये ऑप्शन जरूर है आपके लिए देखने के लिए टू सेट अप अ ब्रांच. मैं बस इसमें ये कहना चाहूंगा कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्योंकि अब इनकम टैक्स आने वाला है. पहले जो हम सोचते थे दुबई में और यूएई में इनकम टैक्स नहीं है, वो लोग भी अब रिजीम चेंज कर रहे हैं, और अगर ये इनकम टैक्स आ जाएगा तो ये 9% के करीब होगा जो आपको देना होगा वहां पे. So with that, I would like to thank you for your patience and hand over to ma'am and Kaustav. Yeah. For that wonderful session, what we can do now is refer to some of the questions that have been raised, and we'll do our best to answer. Pointing out some of the questions की एक जैसा क्वेश्चन था कि अगर SEZ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, जो गौतम जी ने भी बताया कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है काफी फिस्कल और दूसरी चीजों में, बट एज फार एज ये अग्रीमेंट कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज या ट्रीटमेंट दी गई है जो एक DTA सप्लायर या DTA मैन्युफैक्चरर को नहीं दी गई. तो अगर आप DTA मैन्युफैक्चरर हो तभी भी आपको ये पूरा बेनिफिट, या आप अगर वो वैल्यू एडिशन डॉक्यूमेंटेशन प्रूव कर सकते हो, तो यू आर एट पार विद एन SEZ सप्लायर. एक और क्वेश्चन था कि VAT रेट का क्या होगा. आई थिंक रमेश सर ने भी आंसर किया था वो क्वेश्चन कि ये कस्टम्स का टॉपिक है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यदि इवॉल्व होता है कस्टम ड्यूटी के फ्रेमवर्क में, और ये बेनिफिट सिर्फ कस्टम ड्यूटी पे है. आई थिंक 5% कुछ ड्यूटी लगती है, VAT लगता है UAE में, वो 5% इन ऑल प्रोबेबिलिटी मे बी प्रोडक्ट्स के लिए कुछ हियर एंड देयर हो सकता है, बट लार्जली 5% विल कंटिन्यू going forward also. Then there was a question कि silver jewelry studded with diamond stones पे भी लगेगा. हाँ, ये सब पे भी है. हमने ओवरऑल हाई की एक्सपोर्ट जो है हमारे इंडिया से UAE, यानी गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड, हमने फिलहाल उस पे किया है, बट ऐसी बहुत ही पूरी जो चैप्टर 71 की लिस्ट है, काफी सारे प्रोडक्ट्स में इमिटेशन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सब सेक्टर्स में बेनिफिट अवेलेबल है, ऑल्दो उनका वैल्यू एडिशन परसेंटेज अलग हो सकता है. जैसे इमिटेशन ज्वेलरी में वैल्यू एडिशन आपको 40% अचीव करना होता है, बट अभी अगर सिल्वर स्टडेड ज्वेलरी की बात करें तो आई थिंक वहां पे भी वैल्यू एडिशन 6% ही है, 6% के आसपास. जस्ट टू ऐड, जो आपके सिल्वर ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स हैं, प्लेन ज्वेलरी और प्लेन सिल्वर ज्वेलरी और स्टडेड सिल्वर, उनका वैल्यू एडिशन इज एज सेम एज द प्लेन गोल्ड ज्वेलरी and studded gold. So there's a match between. Yeah, there is a match. Absolutely. Imitation jewelry and Jewelry is the higher. Imitation jewelry is high because 40% is physical. Yeah.
I think there was one question कि अगर value addition सिर्फ labor charges 7% और above अगर हो सकते हैं and उसका कोई documentation create किया जा सकता है तो शायद उसमें भी ये देखा जा सकता है because अगर आप formula देखो direct method तो आपका originating material labor और overhead आता है और अगर originating material हम जैसे कि बोले because gold या diamond originate नहीं होता तो वहाँ पे भी अगर 7% इतना value add हो सकता है तो वो भी एक सोचा जा सकता है कि वहाँ पे भी benefit मिल जाए to answer one of the question in principle We should be just careful. One of the examples we've seen in the past is that you're attributing the entire 7% to labor cost, then you will have other costs as well of the manufacturing cost, factory cost. Then the customs department, because you are a commodity on the raw material side, they know what the gold prices are. So it should not that if they add A plus B plus C, then you come to a price much higher than your FOB value of export, then they will scrutinize the application. And it should, A plus B plus C should meet the 100%. Something which is any component on the direct method or indirect method, if it's looking unnatural, means that they will do a scrutiny in the syllabus. I think a question of branch in UAE पे था which we have already covered and at UAE में earlier there was a requirement कि you need to have someone from UAE also to be a shareholder. ये requirement कुछ 2022 में कुछ हद तक relax हो चुका है. वहाँ पे भी देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो overseas company जरूरी है कि कोई शेख या कोई रेसिडेंट या यूएई चाहिए वहाँ पे भी एक रिलैक्सेशन आ रहा है which one can look at and उससे आप आपके प्रॉफिट देख सकते हो स्पेसिफिकली जहाँ पे आपका B2C बड़ा मार्केट है बाकी एक क्वेश्चन था कि इंपोर्ट ऑफ गोल्ड पे वहाँ पे हमने बात की रश्मि मैम ने भी और रमेश सर ने भी अपना इनपुट दिया कि जो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड पे 1% का जो बेनिफिट है उसका जो टैरिफ कोटा जो फ्रेमवर्क है वो एक ऑलरेडी डिस्कशन में है बिकॉज आज की डेट में मैंने जैसे बताया हम 70 और 75 टन करते हैं अब ये 120 140 होगा तो कौन किसको वो बेनिफिट मिलेगा कैसे मिलेगा एंड द आइडिया इज की टू कवर सबको कि क्या वो एक कैपिंग डाल देंगे या फर्स्ट वो एक प्रोसेस डिस्कशन में है जिससे पता चलेगा कि किसको भी ये बेनिफिट मिल सकता है I think broadly we have covered all the questions. Update is that like GJ को इंडियन एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटी वहाँ पर लॉन्च किया है जिसका इनॉग्रेशन किया है Nahid, he is a colleague and she is taking care of that project like Dubai office. So she is here just taking 2 minutes and update you like office in UAE. And what we are our branch of for the MSME of going to the exhibition, we're spending more. Find them a full-fledged office like table chair. हम एक ऑफिस जैसे कि सारे लोगों ने बताया कि दुबई में हमने लास्ट मंथ 29 मार्च को हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने इनॉग्रेट It's not full-fledged. Likely to open for the members second or third week of June. Office is basically what to do is we will give opportunity to our MSME members like a platform where they can come and meet their overseas buyers. They can have an appointment with them, and they have plus what also doing is we are creating a buyer seller meet right जहाँ पर हम buyers जो GCC countries of Gulf
be calling them, inviting, come and meet our members over there. जैसे कि वो लोग गोल्ड ज्वेलरी के लिए आ रहे हैं तो हम उनको गोल्ड के लिए ही बायर्स इनवाइट करेंगे सब जेम स्टोन तो जेम स्टोन बायर्स के लिए डायमंड्स मतलब एज पर द कैटेगरी वी विल बी बायर्स एंड वो बायर सेलर मीट टाइप भी लोग मिलेंगे और उसका जो रेंट वगैरह इट्स वेरी नॉमिनल एंड रीजनेबल व्हाट वी हैव केप्ट अभी वो हम सब उस पे वर्क कर रहे हैं विल गेट बैक टू यू also working on the website और दूसरी चीजें पे काफी चीजें हैं जो अभी चल रही है once वो सारा कुछ हो जाएगा we launch it to be members will inform all our members हमारा एक आइडिया और भी है बहुत सारे हम आपको बताते रहेंगे और जो भी मेंबर्स होगा वो 3 महीने वायर करेगा not more than 3 so that's so can I leave now because Thank you. So, two questions हैं कुछ अभी जस्ट टाइम में बोले है कि क्या अगर ब्रांच ऑफिस दुबई में खोलेंगे में चेंज आएगा द आंसर इज नो इनफैक्ट आपकी कुछ चीजें सिंपलीफाई हो जाएगी बिकॉज जैसे कि हम जो प्रोसेस की बात कर रहे थे स्टेप 4 और स्टेप 5 है जहाँ पे यूएई या दुबई कस्टम्स ऑफिस को वेरिफिकेशन करने जाता है तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी होगी तो आपके एंड से भी डेटा शेयरिंग पे कई बार एक चैलेंज आ जाता है बट अगर यही वो आपका खुद का ऑफिस या खुद की ब्रांच होगी तो डेटा शेयरिंग एंड एवरीथिंग विल बिकम स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन एंड आपको ये प्रोसेस में और कोई हार्डशिप या चैलेंज नहीं आएगा दैट इज वन थिंग सेकंड एक क्वेश्चन है कि गोल्ड यूएई में किसी पार्टी से इंपोर्ट किया जा रहा है ज्वेलरी बना के उसी पार्टी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है नाउ ये मॉडल में आई थिंक एस रमेश सर ने हमें बताया था कि देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ बायलैटरल क्यूमुलेशन का मतलब क्या हुआ ये सेपा का ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया और यूएई दोनों को फायदा होना चाहिए तो अगर इंडिया कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसका रॉ मटेरियल भी वो यूएई से ले रहा है तो उसको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो उसने रॉ मटेरियल इंडिया से लिया जो मैंने स्टार्ट में बताया था ओरिजिनेटिंग नॉन ओरिजिनेटिंग तो अ गोल्ड कमिंग फ्रॉम यूएई एंड इफ यू आर यूजिंग एंड यू हैव अ ट्रेल चेन कि आपने ये यूएई से इंपोर्ट किया वो आपके जो वैल्यू एडिशन कंप्यूटेशन में वो एक ओरिजिनेटिंग मटेरियल बन जाए जिससे आपका वैल्यू एडिशन फुलफिल करना बहुत इजी हो जाएगा आपके पास डॉक्यूमेंट ट्रेल क्लियर रहेगी आपका बेनिफिट का लेने का प्रोसेस सिंपल हो जाएगा तो आई होप आप सभी की क्वेरीज काफी क्लियर हो गई फॉर्मेटिव ये सेशन रहा है so like after this session so it is a time to thank first of all to the entire PwC team like because they have really worked very hard and for the past 3 weeks we are just coordinating for this program and I think like it has been informative to all of you like if you can say a few words like hopefully it is informative for all our members right yes So that's great. So Ramesh sir, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए और आपने इतना वक्त हमको दिया एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कस्टम्स का नोटिफिकेशन जो है कल परसों तक रिलीज हो जाएगा उसमें से काफी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का इंपोर्टेशन का रूल्स है अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो जो 1% वाला कंसेशन है उसमें गोल्ड सर्टिफाइड गोल्ड अगर आ रहा है तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की जरूरत है कि नहीं उस नोटिफिकेशन के द्वारा से हमें पता चलेगा तो आज या कल इशू हो जाएगा ताकि एक तारीख से मई से 1 तारीख से ये एग्रीमेंट लागू हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा एंड आई एम श्योर दैट द कस्टम्स डिपार्टमेंट विल इंश्योर दैट द एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स आर डन एज स्मूथली एज पॉसिबल एंड द गवर्नमेंट इज वेरी कीन टू ensure that exports pick up in a very big way because of this agreement. So if there are any concerns, I think we should definitely take up with the Customs Department and they will definitely give you a very patient hearing. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, Ramesh sir. Thank you so much for your update, your insights, your value addition that you have given. And we are really thankful to you on behalf of GJAPC. And Mr. Gautam, thanks to you also. We could not catch you up during the introduction time, but really welcome and definitely
We are again thankful to you also, your team, like they have really coordinated very well, put a very good efforts also, and I hope the result is here, like all are quite happy, our members, because they got such kind of information for the first time. जो इतना heavy इनको आज information हुए हैं, it took around 2 hours. So it shows the kind of content that your team has delivered to our members. Really thanks. Thank you. Our pleasure for it. Yes, Mr. Gautam, and you are here. Like it's really pleasure to have you here. And definitely, Mr. Costa, like he has really done a hero role because he has really run down the entire PPT to the members. Thank you so much, Mr. Costa. We are really happy to have you here. And Ketan has really played a critical role because he is coordinating the entire this show and the content also, along with Harshit. Thanks to you both. So so participants, I hope like now there is a time to close, but if there is any kind of queries, like you can connect us, Animesh as well as myself, Rashmi. You must be having our email IDs also. So anytime we are always here to support you. Thanks once again. Thank Thank you, you. everyone. And special thanks to all who are here with us after this COVID time. Yeah. Thank you, ma'am. So, thanks, Doctor. Yeah, it was Thank you really- from our side. Yeah. And it's a good thing that for this we also went through all the learning. Very informative. Very informative. So it took 2 hours at least. कि आपने यहाँ से वहाँ पे deliver किया सारा word to word English में, हिंदी में, कहीं पर कहीं चीजें भी inputs रहे, ये बहुत collective effort था. Because of your efforts, the entire business community, the industry would be taking advantage of it. The free trade agreement news में आता है. We know that India and Australia sooner would be in this free trade agreement. We are working with many other countries also for this thing, but at the industry level, people didn't knew how actually it's gonna work. And this was very good initiative. Thank you. Thank you so much. Okay, any time you can connect us for any queries and support. Thank you. Yes, absolutely. But otherwise, he knows every update about this. He's ever seen, I'm just getting some. I don't previously quite often to meet plans. Yeah. I will pick up a movie with you. वो नहीं है, वो बात नहीं। I'm really thankful. Is the recording on? कभी भी आइए हम नेबर्स हैं लेकिन हम लोग मिले नहीं कभी नहीं हम तो वो बड़े होते हैं ये नेबर है अच्छा तो लास्ट भी जब आपने जब हम अपनी ज्वेलरी जुटाना आती है तो नहीं ले पा रहे थे